I welcome Finance Secretary Dr. Ajay Bhushan Pandey, Secretary Expenditure Sri T.B. Somanathan, Secretary Financial Services Sri Devasis Pandey, Secretary Economic Affairs Sri Tarun Bajaj, Secretary Deepam Sri Tuhin Kant Pandey, Chief Economic Advisor Dr. K.V. Subramanian. First, the Finance Minister will make her opening remarks, then we will take some तो यहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन मौजूद है और अब उसके बाद निर्मला सीतारमण के हवाले माइक कर दिया गया है। And good afternoon. This budget, of course, comes at a time when all of us desire to give greater impetus to the economy. And that impetus we thought would be qualitatively spent and give the necessary demand push if we choose to spend big on infrastructure. That is why ये बजट ऐसे वक्त में पेश किया गया है जब सामने बहुत चुनौतियां थीं और अर्थव्यवस्था को गति दिए जाने का काम किया जाना था, लिहाजा अधोसंरचना में ज्यादा खर्च किए जाने की आवश्यकता थी। We chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to सड़कों पुलों पर और ज्यादा खर्च किए जाने की आवश्यकता थी। Attend to the need of the health sector, and even there capacities for better health management had to be brought in the light of what we have gone through in the last year. बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन किए जाने की भी आवश्यकता है। Building in health has taken a very big place in the budget. इसीलिए स्वास्थ्य के लिए क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में बजट में ज्यादा फोकस रहा है। Probably just a feeler on what capacities we are talking about, whether it is establishing of labs, whether it is establishing of National Institute of Virology, or whether it is looking at the blocks where you need critical care centers, or whether you're looking at testing labs. टेस्टिंग लैब्स में किया जाना है, लैब्स में किया जाना है, ज्यादा इंटेंसिव केयर यूनिट्स बनाई जानी है या वायरस संस्थानों के और बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जाए। During the lockdown, that number was increased to a couple of hundred. Now, therefore, लॉकडाउन के समय टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाई गई। Testing labs, Institute of Virology, aspirational districts having better health care. So infrastructure spend for health has gone down to the level of planning for the block level requirements, aspirational district level requirements, state level requirements, और इस हिसाब से तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक तैयारियां की गई। One in general spending on infrastructure, for which there is a 37% increase in the budget. 37% का इजाफा इसीलिए इस सेक्टर में किया गया है। For this year, and health, it was also something which received something like 94,000 crores in BE of this year has gone to 223 lakh crores. 97,000 करोड़ से 2,23,000 करोड़ तक ले जाया गया है। But this doesn't really mean that we've ignored agriculture, where there too we have placed emphasis. I've increased as लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर खर्च करने की वजह से हमने कृषि क्षेत्र को की उपेक्षा की है। To send more credit through to the farmers. Agricultural infrastructure development cess is किसानों को ज्यादा क्रेडिट दिया गया है और कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सेस लगाया गया है। The end consumer paying more than what he is paying today. It is just a लेकिन इसमें इसका ध्यान रखा गया है कि सेस लगाते हुए जो एंड कस्टमर है
वो where आज it जो was, let us कीमत say, चुका रहा है 12%, उसको we उससे brought ज्यादा it down कीमत to ना चुकानी पड़े। 7% and added possibly only 3% on the infrastructure development cess. End of the day, the consumer has ended up paying that much only or less. In no category has he ended up paying more after the agricultural infrastructure development cess. एग्रीकल्चर That we have इंफ्रास्ट्रक्चर done डेवलपमेंट only सेस because लगाने we के बाद wanted ऐसा to be नहीं sure होगा that in order कि to कस्टमर improve को, एंड agricultural कस्टमर को ज्यादा infrastructure, चुकाना पड़े। we have a dedicated amount coming out of the budget, rather than that going into the consolidated fund. It might still go, but we know what has got to be used for agricultural infrastructure. So if these are the kinds of things broadly we've done, equally important is the reform that we're bringing in the financial sectors. Disinvestment, वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है, विनिवेश LIC to इसी का have हिस्सा है। IPO, LIC का IPO लाया जा रहा है। insurance sector to have more in terms of opening up for 74% इंश्योरेंस, for DI. बीमा क्षेत्र में These are very विदेशी clearly निवेश को progressive steps in 74% तक बढ़ा दिया financial गया। sector. Other than that, one major cry of all the banks have been the NPAs, for which we have been repeatedly giving capital infusion. तमाम बैंकों के लिए In order that the bank नॉन books are परफॉर्मिंग असेट्स cleared का जो रोना है, उनकी जो cleaned परेशानी up, है, इसके लिए हम we have come with an कैपिटल इन्फ्यूज announcement करते रहे of हैं। a formulation through which the NPAs will be culled out of the bank's books based on some formulation, not any और अब एक discretion फॉर्मुलेशन there. लेकर आया जा रहा है It कि goes एनपीए to के a सिरदर्दी से holding बैंकों को company like छुटकारा मिले। structure, which after doing the necessary, sprucing up and also cleaning up and weeding out problems of that particular asset, will be through an open process, attract asset reconstruction companies which can come and bid for those assets. Even at that stage, after some haircut, obviously, banks will get some money back to those NPAs, for which they only kept provisioning for तो the अब NPA, इसके लिए but didn't एक have the wherewithal to dispose ये them व्यवस्था of की गई है legitimately. कि So इन we are giving नॉन that परफॉर्मिंग comfort to the एसेट्स को दिया banks. जाएगा खास And एंटिटीज also for को, funding जो the इन पैसों को वापस लाने का काम करेंगी। उसमें से कुछ development पैसा finance रखने के बाद institution बैंक्स को is being बचा brought in. हुआ पैसा दिया All जाएगा। lessons मतलब learned कुछ from हेयर the कट IDBI, सहने which के बाद started उन as a NPAs DFI, का but later went on to become a समाधान state-owned निकाला जा commercial सकेगा bank बैंकों के लिए। functioning and couldn't succeed at that, are taken on board. So this DFI, even as it comes with about a 20,000 crore given by the government, which with a little more every now and then added, will eventually be used for raising about 5 lakh crores in a matter of next 3, 4, 5 years. 20,000 करोड़ is रुपए the खर्च करके formulation 5 where लाख करोड़ when the law जुटाए gets जा passed सकेंगे। on that, we will still have an opportunity for the private sector also to set up their own development finance institution. So this country is not going to be, the needs of this country are such that just one development financial institution which is set up by the government will be adequately meeting up with the demand requirements. No, and therefore we see a future for a DFI which is partly funded by the government and raises capital from the market. डेवलपमेंट is also फाइनेंस competing इंस्टीट्यूशन केवल with सरकार पर निर्भर private नहीं sector बल्कि DFI. प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें जो प्लेयर्स हैं Largely उनको एनकरेज this किया much. जाएगा। But very quickly, I'll move over to talking about how we have not lost the opportunity to clean up government's own books. I had started it in July 2019-20, continued it in February 20, and even now we have made accounts more transparent. Nothing is pushed under the carpet. You're showing clearly सरकार where's के the बही money खाते going. को ज्यादा पारदर्शी Money बनाया given गया to है। FCI is also brought on board. So accounting of government expenditure and revenue statements are all now lots more transparent and open, and absolutely फूड upfront कॉरपोरेशन ऑफ state to इंडिया the को fiscal दी गई deficit. मदद को भी इसमें शामिल करके पारदर्शिता को ज्यादा everybody बेहतर was बनाया गया है। advising, and rightly because everyone had concern that the economy should revive, advising us, please spend more. We not only ensured that the capital expenditure of the government was repeatedly reviewed and spending was encouraged and pushed, we ensured that the spending will not get delayed, and that is why even though we announced one capital expenditure amount during the BE, even that has gone up, that in the RE I had to make additional provisions for it.
With that in mind, कैपिटल we have एक्सपेंडिचर also increased the spending in the पूंजी को forthcoming year. लगाने के As a हिसाब से result, सरकार ने, borrowing क्योंकि इस पर increased. अर्थव्यवस्था की गति आधारित Our है, fiscal deficit, सरकार ने which विशेष started रूप at से ध्यान दिया है। 3.5 during February 2020 has gone to 9.5% of the GDP. फिस्कल डेफिसिट की So बात we हो रही have है, spent, 9.5% तक ये We पहुंच have गई है। spent and we have spent. और ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने Otherwise, खर्च your किया है, fiscal खर्च deficit किया would है have reached और ज्यादा 14%. खर्च किया है, वरना फिस्कल डेफिसिट इतनी नहीं बढ़ती। But does that mean that we are going to show it and forget it? We've लेकिन also क्या इसका given मतलब a ये है कि हम इसको clear दिखाकर और guide भूल जाने path वाले हैं? For deficit management and bringing it down. The हम Finance Commission has also been suggesting that we should डेफिसिट be giving मैनेज a करेंगे। path. We've given our ये जो आय और व्यय के बीच की जो खाई है, which इसको broadly भरने के हिसाब से explains काम where we करेंगे। are. Broadly gives you a broad picture. Specific items are also there about which we can expand, but I suppose in response to your questions. Thank you. वित्तीय घाटा बढ़ा है, लेकिन ये वित्तीय घाटा इसलिए बढ़ा Thank you, है ma'am. क्योंकि हमने बहुत खर्च किया है। आने वाले दिनों में वित्तीय घाटे के प्रबंधन के लिए विशेष काम किए जाएंगे। और अब आपके सवाल आमंत्रित हैं। अब आइए देखते हैं क्या सवाल किए जाते हैं और क्या जवाब वित्त मंत्री देती हैं। Ma'am, you rightly said that the glide path has been mentioned, and you did lay it out that over the next 5 years we might see the fiscal deficit coming down. But how hopeful are you with the current expenditure roadmap that you have given, that the fiscal deficit for the next year will be contained in that particular figure of 6.8%? Because the borrowing number also again continues to be quite high. And what gives you confidence in terms of job creation? That is what people have been फिस्कल डेफिसिट को wanting कम to कैसे किया जाएगा, hear वित्तीय from घाटे you, को कम because a कैसे lot of किया people in जाएगा, the क्योंकि आप pandemic खर्च lost तो their बढ़ाएंगे jobs ही, साथ and में they आप are yet to उधार get लेने back वाले their हैं। jobs. तो 6.8 का जो आपका लक्ष्य है अगले वित्त Haven't वर्ष में we इसको करने का, ये announced कैसे an होगा? incentive scheme for people to join back and people to take their jobs back, for employers to take employees who were thrown out, to bring them back and have some money paid from the government for their EPFO and so on. So we have worked out a scheme, and that scheme will run for the course of the, I think till about next year June. We've allowed people to get all those people who they threw out of their jobs to be back in the लोगों job, को रोजगार for में whom वापस we will लाने pay जाने the के लिए EPFO हमने 2 years. इसको एनकरेज किया है। So we have ईपीएफओ का given खर्च an सरकार incentive to उठाएगी, people to take them back. तो लोगों को वापस लिया जाए, Next question. I think उनको let's वापस next रोजगार question, we मिले, move to the next person. इसके 31. लिए हमने कोशिश की है। हालांकि इसमें फिस्कल डेफिसिट संबंधित जो सवाल था उसका उत्तर नहीं मिला। लक्ष्मण बोल रहा हूँ सीएनबी। 1 minute, 1 minute. You asked a question on the deficit, whether we will be able to contain ourselves in अब मिल रहा है। 6.8% or not. If you notice our revenue figures for this time, the revenue figures, if anything, are understated and not overstated. Because otherwise, by this time, all of you would have been coming out and telling us that we won't be able to achieve. So we have taken our nominal GDP 14.4% and the revenues at 16.7. So the buoyancy is only 1.16. We are hopeful that we will be able to get more than this and also achieve more in the other areas of non-tax revenue and the disinvestment. And we will definitely be within 6.8 and could be lower also. तो हमारा अगर just to add जीडीपी on the अगर आप job creation, देखें और the साथ में रेवेन्यू significant जनरेशन increase देखें in तो इसका outlay जो for बॉयंसी है infrastructure that वो man has done, 1.16% का ही रह will जाता also है। have a तो हम बहुत signal, आसानी sharp से impact on job creation, 6.8 especially का in वित्तीय sector. घाटे का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। Activity actually creates both positive and negative, spillovers, basic linkages, and thereby job creation in the informal sector. मैम मैं है कि इससे पहले हर ये का के सामने ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पैदा की आम लोगों से जो सेविंग है वह करने के में ऐसे ये डिमांड पैदा कर सकती है आपके हिसाब से, क्योंकि जो इंफ्रा पे खर्च करने की बात है या दूसरी चीज़ें उसमें लॉन्ग टर्म डिमांड आएगी, लेकिन इमीडिएट डिमांड आए उसके लिए आपके हिसाब से कौन से प्रावधान किए गए? No, that's not true. Infrastructure project may take long time to complete, but the demand creation will happen immediately because as the work starts happening in the ground, people are going to get wages, orders are going to be booked for core commodities, for building of those assets. So demand generation happens immediately. The project completion may happen. सवाल ये later. था कि अर्थव्यवस्था को फौरन ही पुश किए जाने की Number 10. जरूरत है, डिमांड को फौरन जनरेट किए जाने की जरूरत है, जबकि
अधोसंरचना में जो खर्च है वो किया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में वक्त लगेगा। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि प्रोजेक्ट पूरा होने में वक्त लगेंगे, लेकिन डिमांड फौरन ही पैदा हो जाएगी। में काफी एनपीए बढ़ा और आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से भी कुछ 14% तक बढ़ सकता है इस साल सितंबर तक। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि जो बैंकों के लिए आपने जो अनाउंस की है, क्या ये पर्याप्त है उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए? साथ ही ये जो 9.5% जो फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी का, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर क्या असर रहेगा? इसका असर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है खर्च कर रहे हैं सरकार। इसके कारण एफडी फिस्कल डेफिसिट इतना तक पहुंचा है। जब खर्च कर रहे हैं और क्वालिटेटिवली अच्छा खर्च कर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।